Hello students, today we are going to learn about some basics of system programming. Let's begin with introduction. What is system programming? A system programming is a program which helps to execute users' program effectively on a computer system. A system programming can also be defined as the activity of designing and implementing system programs. So basically हम जो भी प्रोग्राम अपने कंप्यूटर सिस्टम पे एग्जीक्यूट करते हैं उसको इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करवाने के लिए सिस्टम प्रोग्रामिंग हेल्प करता है. Computer software system is classified into two categories. First, system program and second is application program. So what is system program? Software required for running a majority of users' program is called system program or system software programs. For example, operating systems and device driver. एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं. हम एडिटर्स यूज़ करते हैं लाइक टर्बो सी प्लस प्लस, राइट. सो उसमें हम कुछ कोड्स लिखते हैं, छोटा सा कोड लिखेंगे. तो कोड लिखने के बाद हम उसको क्या करते हैं, .c या .cpp से सेव करते हैं, राइट. तो कभी सोचा है वो प्रोग्राम अपने आप कैसे एग्जीक्यूट हो जाता है? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट इज OS. Application program or application software program are the applications written for specific purpose or they are called specific applications. For example, MS Word or Mozilla Firefox. Microsoft Word जो है is an application software for word processing. Okay, and Mozilla Firefox are the application software written for internet browsing. ऐसे और भी है लाइक कंप्यूटर गेम्स आर ऑल्सो अ एप्लीकेशन प्रोग्राम. नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. System software is used for operating computer hardware. Application software is used by user to perform specific tasks. जैसा अभी मैंने बताया, software required for running a majority of user program is called system software and special purpose software designed for specific use is called application software. It is developed by system designer. सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है डेवलप बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर को कौन डेवलप करता है? सिस्टम डिज़ाइनर. एंड इट कम्स अंडर द सिस्टम प्रोग्रामिंग. एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइंड और डेवलप बाय द एप्लीकेशन प्रोग्रामर एंड इट कम्स अंडर द एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग. System softwares are installed on computer when operating system is installed. Application softwares are installed according to the user's requirement. A system program is primary concern with the effective management of computer system. An application program is primary concern with the solution of some problem using the computer as a tool. In general, the user does not interact with system softwares because it works in background. In general, the user interacts with the application software. System software can run independently. It provides platform for running application softwares. Application softwares can't run independently. They can't run without the presence of system software. अगर system software ही नहीं होगा तो application program run नहीं होगा. Okay, so usually system software uses low level language or middle level language for developing system programming, and high level languages are usually used for making the application software or application programs. Some examples of system softwares are compilers, assemblers, linkers, loaders, editors, etc. are the examples of system program. And the examples of application softwares are Microsoft Word, Microsoft Excel, Photoshop, word processors, web browsers, media players, etc. are the example of application software. Okay, so next is difference between system programming and application programming. Following table compares the system and application programming. Okay, so let's see. System programming is comprised of writing programs for assemblers, compilers, editors, etc.
Application programming is used for providing means to facilitate applications such as Management Information System, Microsoft Words, etc. System programming is more closer to the system architecture. Remember, the system programming is more closer to the system architecture, but it is not closely related to system architecture. Application programming is not closely related to the system architecture. सिस्टम प्रोग्राम जो सिस्टम प्रोग्राम्स होता है वो रीडेबल नहीं होता है, ओके, यूज़र फ्रेंडली भी नहीं होता और रीडेबल भी नहीं होता. हम सिस्टम प्रोग्राम्स में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, जबकि एप्लीकेशन प्रोग्राम मोर यूज़र फ्रेंडली होता है. हम इसमें मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हैं और हम नया एप्लीकेशन भी बना सकते हैं. बेसिकली इन सिस्टम प्रोग्रामिंग द डीबगिंग इज़ डिफ़िकल्ट. इन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग डीबगिंग इज़ नॉट सच एज डिफ़िकल्ट. The fault fixing is not easy but reliable in system programming. Fault fixing easy and reliable in application programming. In system programming, programmers used to build application. For example, operating system, DBMS, etc. And in application programming, makes system program to do work. For example, website, MS Word, video games, etc. System programming makes machine to do work. It maintains the software such as operating system, database communication, etc. Application programming makes system program to do work. Application programming maintains software specific to business functions such as payroll, accounting, inventory, etc. Okay. Elements of programming environment. The following are the components of programming system. First, assembler, then loader and linker. Next is macro processor, then compiler, editor, debugger, device drivers, and operating system. So let's see one by one. What is assembler? What are these elements of programming elements in detail? Okay. So let's see these elements in detail. First is assembler. An assembler is a program that converts assembly language into machine code. It takes the basic command and operations from assembly code and converts them into the binary code that can be recognized by a specific type of processor. Okay, so क्या है assembler? Assembler is a program which translates the assembly language into the object code or a machine language. Yeah, programmers, what happens basically, programmers found it difficult to write or read a machine language programs. So they begin to use a mnemonics. Mnemonics हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है mnemonics. It is a symbol for a machine, for each machine instructions, which they would subsequently translates into the machine language, such as mnemonic machine language is now called as assembly language. पहले इसको mnemonic machine language कहा जाता था, अब इसे हम assembly language कहा जाता, अब हम इसे assembly language कहते हैं. तो an assembler enables the software and application developers to access, operate and manage a computer's hardware architecture and components. Okay, so क्या है assembler? Assembler is a program which translates assembly language into the object program or a machine language program. The input to an assembler program is called source program. जो हम input देते हैं assembler को उसको हम source program बोलते हैं, and जो output निकलता है उसको हम machine language program बोलते हैं. Okay, the figure shows the assembler which inputs an assembly program and outputs the object program or a machine language program. Okay, next is linkers and loaders. So linker, a linker combines one or more object files and possibly some library code into either some executable, some library or a list of error messages. The task of integrating the program module together is called linking. ठीक है, so क्या होता है basically linker?
क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल लिंकर जो है वो एक प्रोग्राम होता है. लिंकर इज अ प्रोग्राम दैट टेक्स वन और मोर ऑब्जेक्ट जनरेटेड बाय अ कंपाइलर एंड कंबाइंस देम इनटू अ सिंगल एग्जीक्यूटेबल कोड. फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक कोड लिखते, राइट, एक सी प्रोग्राम लिखा, ऊपर हमने हेडर फाइल नहीं डाली, हैश इंक्लूड stdio डॉट h हम डालते हैं. व्हाट इज दैट? दैट इज अ लाइब्रेरी फाइल. ओके, तो हम लाइब्रेरी फाइल कभी कभी नहीं डालते हैं, बट स्टिल जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो कैसे अपने आप हेडर फाइल्स के साथ या जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज है उसके साथ कनेक्ट हो जाती है. इट जस्ट बिकॉज ऑफ लिंकर. लिंकर का काम होता है हमारे प्रोग्राम को लाइब्रेरी फाइल्स के साथ लिंक करे, और लिंक करने के बाद एक पर्टिकुलर जो फॉर्मेट में हमको आउटपुट जो है वो निकाल के दें. Okay, so linker is a program that takes one or more object generated by a compiler and combines them into a single executable code. In a high-level language, some built-in header files or libraries are stored. These libraries are predefined and contain basic functions which are essential for executing the program. These functions are linked to the library by a program called a linker. समझ में आया? तो लिंकर का क्या काम है? नेक्स्ट इज loader. A loader reads the executable code into the memory, does some address translation and tries to run the program, resulting in a running program or an error message or both. Once the assembler produces, क्या होता है, एक बार assembler ने कोई object code प्रोड्यूस किया, कोई ऑब्जेक्ट कोड दिया, तो दैट प्रोग्राम मस्ट बी प्लेस्ड इनटू द मेमोरी. तो वो जो प्रोग्राम है वो हमेशा हमको क्या करना होता है, मेमोरी के अंदर स्टोर करना होता है, एंड देन उस मेमोरी में से वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है. तो ये काम है लोडर का. इट इज़ द फंक्शन ऑफ लोडर टू प्लेस द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इन मेमोरी इन एन एग्जीक्यूटेबल फॉर्म. अ लोडर इज अ प्रोग्राम. क्या है लोडर? लोडर. A loader is a program that places programs into the main memory and prepares them for execution. So there is no wastage of memory and translation time, which is in assembler. There are various loading schemes like absolute loader, relocating loader and direct linking loader. तो ये जो है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. ओके, the figure shows the loader the schematic diagram of a loader. ओके, क्या करता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज पे है. लोडर का काम क्या है, उसको मेन मेमोरी के अंदर प्लेस करना, जिससे वहाँ पे एग्जीक्यूशन शुरू हो सके. ओके, नेक्स्ट इज मैक्रो प्रोसेसर. सो मैक्रो प्री प्रोसेसर. तो बेसिकली मैक्रो क्या होता है, अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड. ध्यान में रखो, ध्यान देना, अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड इज कॉल्ड मैक्रो. ठीक है, जो हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाते हैं, लाइक हमने ऐड का प्रोग्राम बनाया, a+b=c. ये एक छोटा सा प्रोग्राम हमने बना के रखा है. अब इस छोटे से प्रोग्राम को हम रिपीटेडली हम किसी भी बड़े प्रोग्राम के अंदर, या हमको वो प्रोग्राम बार बार यूज़ होने वाला है, तो वो प्रोग्राम का सिर्फ एक लिंक या उसका जो नेम है वो अगर हम किसी प्रोग्राम में देते थे तो वहाँ से वो लिंक होके आपके प्रोग्राम में एक्सपांड हो जाएगा, आपके प्रोग्राम में एग्जीक्यूट हो जाएगा. तो उसको हम क्या बोलते हैं, अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड इज कॉल्ड मैक्रो. ओके, सो अ मैक्रो प्रोवाइड्स एन ईजी एंड एफिशिएंट सॉल्यूशन टू बी problem of repeatedly reading macro provides an easy and effective solution to be problem of repeatedly needing the sequence of instruction. A preprocessor, generally considered a part of compiler, is a tool that produces input for compilers. It deals with macro processing, augmentation, file inclusion, language extension, etc. द मैक्रो प्री प्रोसेसर, क्या काम है मैक्रो प्री प्रोसेसर का, इट एक्सेप्ट्स द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, जिसके अंदर मैक्रो डेफिनेशंस और मैक्रो कॉल्स होता है, एंड देन उसको ट्रांसलेट करता है असेंबली प्रोग्राम में, विच डू नॉट कंटेन्स एनी मैक्रो. ठीक है, ध्यान रखो क्या है, मैक्रो प्री प्रोसेसर क्या करेगा, ऐसे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम जिसके अंदर मैक्रो डेफिनेशन और मैक्रो कॉल्स होता है, उसको लेगा, यानी वो एज ए इनपुट उसको लेगा, उसको प्रोसेस करेगा. ठीक है,
प्री प्रोसेसर क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा एंड देन उसको ट्रांसलेट कर देगा, यानी उसका आउटपुट हमको देगा जिसके अंदर मैक्रोज नहीं होते. Okay, so the macro preprocessor accepts an assembly language program containing macro definitions and macro calls and translate into assembly program which does not contain any macros. The entire operating system is written as a series of macro definition and macro call. पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इसी तरीके से लिखा जाता है. सो मैक्रो इज एब्रीवेशन ऑफ group of instructions. Okay, so here the figure shows assembly language program with macros as input, and macro preprocessor expands the macro. The output is assembly language program without the macro. Okay, next is compiler. A compiler is a program that converts high-level language to assembly language. Similarly, an assembler is a program that converts assembly language to the machine-level language. Example, Turbo Compiler for C language. Right? So, compiler क्या है? It is a translator which translates the high-level language into the low-level language. Okay. As a user's problem become more categorized into the different areas such as statistical problems, scientific, business, etc., the specialized language, high level language were developed. ठीक है, इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप किया गया था. दीज हाई लेवल लैंग्वेज अलाउज द यूजर टू एक्सप्रेस सर्टेन प्रॉब्लम्स कंसाइसली एंड इजीली. The high-level language like Fortran, COBOL, C, Algol are processed by the compilers. Compiler का काम क्या है? High-level language को low-level language में convert करना. ठीक है? Next is interpreter. An interpreter, like a compiler, translates a high-level language into the low-level machine language. Okay. So the difference क्या है then? कंपाइलर और इंटरप्रेटर के अंदर क्या डिफरेंस है? एक माइन्यूट सा डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? दोनों भी एरर्स निकालने के लिए काम आते हैं. दोनों का काम भी कंपाइल करना है, प्रोग्राम को कंपाइल करना है. तो बेसिक डिफरेंस क्या है? कंपाइलर क्या करेगा? आपका पूरा प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट करके, यानी कंपाइल करके उसमें जो भी एरर्स है वो एक साथ दिखाएगा. जबकि इंटरप्रेटर का काम क्या है? वो प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा और जहाँ पे उसको एरर दिखेगा वो एरर आप वहीं पे ही वो एग्जीक्यूशन स्टॉप करके आपको एरर दिखाएगा. वो एरर आप सॉल्व करोगे, देन वो अपना काम फिर से शुरू करेगा. सो एन इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम दैट एग्जीक्यूट्स अ सोर्स प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एंड कन्वर्ट इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. ओके, so in contrast, an interpreter reads a compiler reads the whole source code at once, create tokens, checks the semantic, generate the intermediate code, executes the whole program, and may involve many passes. In contrast, an interpreter reads a statement from the input, convert it into the intermediate code, execute it, then takes the next statement in the sequence. If an error occurs, an interpreter stops the execution and report it. Whereas a compiler reads the whole program even if it encounters several errors. Okay. So the CPU uses a program counter. ठीक है, क्या यूज़ करता है CPU? एक प्रोग्राम काउंटर यूज़ करता है, PC जिसको बोलते हैं, टू नोट द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड. कौन सा इंस्ट्रक्शन इसके बाद एग्जीक्यूट होने वाला है वो नोट करने के लिए. सो बेसिकली इसका एग्जीक्यूशन साइकिल किस तरीके से होता है? द फर्स्ट इज इट फेचेस द इंस्ट्रक्शन, then second decode the instruction to determine the operation to be performed, and third is executes the instruction. At the end of the cycle, the program counter is updated. Okay. Next is editor. So editor is a program which edits the text. Okay, editors or text editors are the software programs that enables the users to create and edit the text files. In the field of programming, the term editor usually refers to the source code. Okay, हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है? एडिटर्स जो है बेसिकली हम लोग
प्रोग्राम एडिट करनी है, प्रोग्राम लिखने के लिए, सोर्स कोड लिखने के लिए हम एडिटर्स का यूज़ करते हैं. एडिटर्स दैट इंक्लूड मेनी स्पेशल फीचर्स फॉर राइटिंग एंड एडिटिंग कोड. For example, Notepad, WordPad are some of the common editors used on Windows operating system. And VI, Emacs, Jet, Pico are the editors used on Unix operating system. Okay, so editors are classified into text editors and graphic editors. Okay, the editors basically classified into stream editor, line editor, screen editor, structure editor. We will learn more about the editors in the next chapter. Okay, we write the source code on the editor, and what editors do? Editor format the source code. The fundamental function of editing are traveling, yani moving, editing, viewing and displaying. Okay, so debugger. A debugger program is one that allows the user to view another program line by line. A debugger is very useful to find semantic errors in the program. So it is necessary as it helps the programmer visualize the program flow. Debugger is a system program used to debug the programs. It helps the programmers to debug during the program development. Okay, debug monitors are used for dynamic debugging. It provides the following facilities, or some process of debugging are used for the setting the breakpoints in the program. Okay, it first reproduces the problem, then describes the bug, try to get as much input from the user to get the exact reason. Then, when control reaches to the breakpoint, the debugging conversation is initiated using the debug monitors. It captures the program snapshot when bug is appear and try to get all the variable values and state of the program at that time, using for displaying values of variable and also assign new values to the variable. Next is fix the existing bug, but also check that any new bug does not occur. What it does, invoking the program variables in watch so that programmer can test the values of variable in the program and then fix the existing bug, so that and also check that no new bugs are occur. Okay, the next is operating system. You know very well, an operating system is the most important software. It is a system software that runs on a computer. It manages the computer's memory and processes. Okay, operating system का क्या काम है? सारी चीज़ें manage करना, memory as well as it also process the data as well as all of its software and hardware. It also allows you to communicate with the computer without knowing how to speak the computer's language. Yes, following are the functions of operating system: memory management, process management, device management, file management, security, control over system performance, job accounting, error detecting aids. All the works are done by the operating system. So what is basically an operating system? An operating system is a set of system programs that act as an interface between computer user and computer hardware. An operating system is a program designed to run other program on a computer, right? क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है? ताकि दूसरे जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन हो सके. सो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इट इज़ कंसिडर एज अ बैकबोन ऑफ अ कंप्यूटर, मैनेजिंग बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज. ओके, so what is the basic purpose of an operating system? It provides an environment for running users program. It provides an interface to the user to communicate with the system. Operating system manages the computer resources in an efficient manner. Operating system provides an overall control to the system. To carry out all this task, operating system occupies a very special place in the computer.
An operating system is a program running all the time on computer called kernel. Okay. Next is device drivers. To communicate with any devices like such as mouse, printer, keyboard, device drivers are loaded into the operating system. आपको माउस चलाना है, आपको प्रिंटर चलाना है, आपको कीबोर्ड चलाना है, जॉयस्टिक चलाना है, कोई भी डिवाइस आपको चलाना है, प्रिंटर चलाना है, तो आप बिना डिवाइस ड्राइवर्स के किसी भी डिवाइसेस को, आउटपुट डिवाइसेस या इनपुट डिवाइसेस को चला नहीं सकते हो. सो डिवाइस ड्राइवर्स आर द सॉफ्टवेयर थ्रू विच द कर्नल ऑफ अ कंप्यूटर कम्युनिकेट्स विद द डिफरेंट हार्डवेयर without having to go into the detail of how the hardware works. It is the software that controls a hardware part attached to a computer and allow the computer to use the hardware by providing a suitable interface. The device driver is a system program which uses the functionality of the device when it is loaded into the memory. Okay. Thus, the purpose of the device driver is to allow smooth functioning of the hardware for which it is created and to allow it to be used with different operating system. Okay. Thank you for watching.